हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द जियोथर्मल एनर्जी। इसके बारे में बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, इसके अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द जियोथर्मल एनर्जी। दोस्तों, जियोथर्मल एनर्जी इज़ द थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। दोस्तों, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है और द सेंटर ऑफ द अर्थ रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर एज द सन विच इज़ नियरली कॉन्स्टेंट ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा प्रोसेस? न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन। ड्यू टू द सच हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, some rocks melt which result in the upward motion of the mantle. These molten rocks from in the earth crust are pushed upward where they get trapped in the certain region called hot spot. क्या कहलाएंगे? hot spot. नेक्स्ट बात करते हैं हॉट स्पॉट्स। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट स्पॉट, steam is generated. Sometimes this hot water form the region of fine outlets at the surface. When this hot water gushers out of one of these outlets, it is called hot spring. It is called hot. दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स इंक्लूड दोज डू नॉट कंज्यूम फॉसिल फ्यूल्स, दे आर वाइडली अवेलेबल एंड डू नॉट कॉज एनी अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। हेयर द लिस्ट ऑफ द मेजर ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, जिसमें फर्स्ट आता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। फर्स्ट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सेकेंड वन इज द सोलर एनर्जी, थर्ड है हमारा विंड एनर्जी, फोर्थ बायोमास एनर्जी, फिफ्थ जियोथर्मल एनर्जी एंड सेवन्थ इज द टाइडल पावर। इनका हम ब्रीफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ेंगे फर्स्ट वन दैट इज योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, तो दैट इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द वाटर। द पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं P.E, the potential energy stored in the water is made to drive a water turbine that produce electricity. This kind of energy production is known as a hydroelectric power. This kind of energy production is known as a hydroelectric power. It is the most commonly adopted alternative energy source at the present time. This one is energy known that is your hydroelectric energy. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी में हमने देखा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द वाटर और ड्राइव करती है वाटर टर्बाइन को, और उसकी वजह से हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी दिस इज द एनर्जी दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन, जो कि हमें काम से मिल रही है, रिसीव्ड फ्रॉम द सन, एंड इट इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स एंड बाउंड टू बी अवेलेबल फॉर द सेंचुरी टू मैनकाइंड। तो हमारी जो सन की एनर्जी है हमारे पास अवेलेबल है और इसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वन दैट इज योर विंड एनर्जी। विंड एनर्जी बात करते हैं तो विंड पावर इज कंट्रोल्ड बाय द पुश ब्लेड्स ऑफ द विंड टर्बाइन दैट आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी, एंड इट इज इफेक्टिव अल्टरनेटिव सोर्स इन फील्ड्स देयर आर द वेयर द विंड वेलोसिटी इज हाई। नेक्स्ट energy that is your biomass energy. What is biomass energy? The energy is developed from the waste of animals and humans that includes by-product along with agriculture fields, municipal solid waste and the timber industry. Next, that is your geothermal energy, that is already discussed. It is the energy that is generated from the heat within the earth. हमें याद रखना अर्थ। It is the energy that is generated from the heat within the earth, and hot rocks in the core of the earth emits the surface
of the earth with steam and pressure. किसका ध्यान रखना है? steam and pressure. And the steam is used to run turbines and produce electricity. नेक्स्ट एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, दैट इज एनर्जी नोन एज योर टाइडल पावर. व्हाट इज एनर्जी? इज टाइडल पावर. In the tidal, 71% of the Earth's surface is covered. 71% of the Earth's surface is covered by the water bodies, which are mainly oceans. The tides in the water body falls and rise because of the gravity of the moon and the sun. Next, that is your geothermal gradient. What is the geothermal gradient? Geothermal gradient क्या होगा? That is your a geothermal gradient. Geothermal gradient. Geothermal gradient is defined as a difference in the temperature between the core and the crust of the planet. Geothermal gradient is defined as the difference in the temperature between the core and the crust of the planet. And the geothermal gradient is the driving force of the continuous conduction of thermal energy in the form of heat and from the core of the surface. And the temperature gradient may sometimes reach over 4000 degrees Celsius. What is the value? Is 4000 degree Celsius. दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.